Hey, interesting day. So was in good profits in the morning and was wiped out. Uh, so I don't regret not trailing my stop loss. So the logic was if you're watching my post market, I did short it open and was expecting 1840 to be taken out, and also was expecting a bounce from these levels, say 80 to 40 levels, considering you see an up move on these from these levels. So that was expected, but wasn't really expecting high to be taken out, considering the VIX is 12 and Nifty almost did 400 points today, from 200 to 100, 200 to 80, 80 to 100, 200, 200 to again 120, 120 to again 250. So yeah, this was really surprising, and this came because of Reliance, even though Bank Nifty was very quiet till 2 o'clock. So yeah, what will I do on Monday? So even though positionally I have a opinion of being short, I have to respect how the closing has happened. So I wouldn't really look for shorting opportunities till 1840 is taken out. That is this, or even if today's low is taken out, I'll look for some shorting opportunities. But till then, I'm not really looking for shorting opportunities. We'll see how Monday 1 hour closes. System trade did not trigger. 2 o'clock system trade was below 2. It's a short. Stop loss too high. Did not trigger. Yeah. Thank you. तो ओपन पे मैं शॉर्ट था और मैंने ट्रेल नहीं किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1840. अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1840 और अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा था मैं, और सारा प्रॉफिट उड़ गया. ये सरप्राइजिंग मूव था काफ़ी मेरे लिए. तो ये मूव अगर आप देखें तो यहाँ रिलायंस बढ़ा, और रिलायंस फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी कंट्रीब्यूट किया अप मूव, और बैंक निफ्टी काफ़ी शांत बैठा था 2 बजे तक. मैं रिग्रेट तो नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता था कि ऊपर जाना है इसको इस लेवल्स पे 1880 और 1840 के लेवल्स पे, क्योंकि पिछला मूव भी यहीं से आया है अगर आप देखें तो. पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डे आए तोड़ेगा. तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग था. निफ्टी ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400 पॉइंट्स बनाए आज 12 के विक्स में. तो देखते हैं क्या होता है मंडे को. मैं वैसे तो अगर आप देख रहे हैं तो मैं बेरिश था, पर आज की क्लोजिंग को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आज की क्लोजिंग मेरे हिसाब से अच्छी हुई है. अब जब तक 1840 नहीं तोड़ता या आज का लो नहीं तोड़ता तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ये रेंज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा 1880 1840. उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा. तो मंडे बना क्लोज के बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या करूँगा मैं. तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा. बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड नहीं किया, निफ्टी में ट्रेड किया था, और मैं प्रॉफिट छुड़ गया उसमें. सिस्टम ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ. 2 o'clock के नीचे सेल बोला था, 2 o'clock स्टॉप लॉस रहेगा हाई, वो ट्रिगर नहीं हुआ. थैंक यू.